तो डिज़ाइन भी करना था, उसको एग्जीक्यूट भी करना था और परफॉर्म भी करना था। तो आई थिंक इट वाज वेरी नाइस और एक सेंसिबिलिटी मेंटेन करके रखनी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हाथ पे आपके कुछ शूट। Hello, Ajay sir. Towards the left. Hi, hi, Ajay sir. Firstly, great trailer. I wanted to ask you that from India to Bholaa, what is the evolution of yourself you have seen as a director, the changes you have observed? I really don't know. I mean, you grow every day, and you learn from your mistakes, other people's good work, your own work, and you can't pinpoint a thing, but you keep growing and you keep learning. Hi, this is Saurabh Bhai from News Nation. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा ट्रेलर है और 3D में विजुअल ट्रीट आपने दिए सबको और क्वेश्चन पूछने से पहले हर हर महादेव। जिस तरीके से आपने इसको शूट किया डिवाइन नगरी में, जब भी आप चाहते, क्योंकि आपको बहुत देखा जाता है वहाँ पे, और जिस तरीके से आपने भस्म लगा के इंटेंस आपकी आंखें तो है ही, और आपकी इंटेंसिटी ने भी एक जो विजुअल ट्रीट हमें 3D में दिया है। सो तबू जी, आप कैसे देखती हैं इंटेंसिटी को, और क्योंकि आंखें तो नहीं है ही, और जिस तरीके से भस्म लगाती कैसा अवतार अजय सर का आपने देखा है जो अभी 3D में हमने भी देखा है? आई थिंक इस रोल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर इतना फिट होता जितना ये फिट होते हैं। और आई थिंक इन जो एक सारा इमेज और इनकी जगह है वो ख़ास तौर पे डिफाइन होती है इंटेंसिटी से। इसका ये मतलब नहीं कि ये दूसरी कैरेक्टर्स को उतना सूट नहीं करते, लेकिन जैसे ये हैं, जैसे ये रियल लाइफ में भी है, तो उन्होंने कैरेक्टर्स भी ऐसे चुने हैं और वो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पहचान है और बन गई है, ये इतना मैं कह सकती हूँ। So this film is a remake of Tamil film Tabu. Whether you had any opportunity to kind of that location, changes should be made? No, not really, but through people we've been in touch, and we are discussing a few things for the future. Hello. Sir, yeah. Left. Sir, right, सर सुमित के फ्रॉम कोलकाता। सर व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म आपको एक्टिंग या डायरेक्शन व्हिच प्रोसेस यू एंजॉयड द मोस्ट? You enjoy the process of working. You can't segregate between acting and direction because it's all one. You enjoy in totality filmmaking. You enjoy waking up in the morning, going to work, and both are a part of it. You know, so it's a combination. You can't enjoy one without the other, and the other without. Hello, Ajay sir. Right at the center. Hi, thank you. Yeah, I have to ask you, after Shibai, this was already quite a benchmark when it comes to action, because we saw that you really push limits, and here we see the limits are pushed even harder in the best way possible. Something that comes to you so naturally, thanks to your father, it's probably something you've designed. But here, sir, there are some practical stunts which really look absolutely crazy. Seems impossible to be even humanly impossible. So, what was the thought process behind it? Was it something you read in the drawing board and consciously you had to make those action pieces? See, for one, the first thing when I make an action film, my biggest first attempt is, without naming, I would say most of the films I see in our country, they are fabulous action, but they are always inspired, or you can have a resemblance to some sequence of an Hollywood film or a European film or something like that. So, especially when action is concerned, my whole intention is that create something new, execute it in a different way. That's why in Shibai and this also people say there are shots which they really don't know how they must have, and then plan it, and then I mean it's a whole process. But it starts basically with we need to create something new, our own, and keeping it stylized, but keeping it very, very Indian. Not westernizing it completely. Hi Ajay, Tabu, this is Komal from Indian Express. Since this is an action film, not about action, we saw so much happening on the screen. I want to understand from you, what are the safety measures you take on set? Because even this morning, Mr. Bachchan shared that he had an accident too. And to hear that
quite a bit. So, what are the safeguards? Look, it's like our job is difficult and easy also. Mr. Bachchan, from where he started, and, and then later when we started, at that point of time, we do action, there were no mattresses, there were no safety measures, there were cables. We injured every part of our body. Mr. Bachchan has done shots which you can't even imagine. I remember getting injured when we were doing Major Saab also, which he insisted we had to jump for something, it must be 30 feet, 3 floors high. And I told him, let's not do the shot, it's a night sequence, I mean, we can work it out with duplicates. And we both were supposed to do it. He insisted, let's do it. And he had an injury then also. So it's that enthusiasm. But now I would say, now things are much more. I think there are cables, there are a lot of safety precautions. There are ambulances on set, there are doctors on set, there are paddings and lots of stuff. So it's become relatively much easier, thank God, because while we are aging, things are getting easier also. Yeah, so there is a lot of it. It's like, it's like also driving a car. I mean, you can have an accident any time, but you try to be safe all the time. So it just happens sometimes. We try to take all the safety measures, but there are risks. Definitely. Suppose it's scary though. Well, if you think about it, it is. There's always 1% chance of you getting injured. And actually, in fact, even before you asked this question, I wanted to maybe conclude whatever by thanking my entire action team for keeping me safe, for keeping everybody safe. And this is exactly what I wanted to talk about, that it's really, really not easy to execute an action film. It's not easy to physically achieve so much and do so much and just do it actually there in real time. You need a set of really dedicated people and who care about people's lives, who will protect you and make you do the right things, and not make you do what you should not be doing. And I had a fantastic team, and I want to thank each person of that team. Yadavji, Suri, our team from overseas, Rama, him, most importantly, everybody who did the cabling, and people who were our body doubles sometimes. So yeah, it is scary, but now my fear has really reduced by a huge percentage. I enjoy it now. Ajay, there's a question. This is Ravi from ABP. अजय सर, चूंकि बच्चन जी की इंजरी की बात हुई और आपने भी बताया कि पहले कैसे जो सुरक्षा के जो मानक थे, स्टैंडर्ड्स थे, वो काफी लो थे और अब हाईटेक चीजें आ गई हैं। आपका भी करियर 30 साल पुराना है, 30 साल से ज़्यादा समय से आप काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्शन फिल्मों में आपने काम किया। कभी एक्शन करते हुए कोई ऐसा मौका आया जब आप काफी खुद डर गए हो, क्योंकि आपने भी जब 90s में काम किया तब भी इतने हाई स्टैंडर्ड्स नहीं थे? डरने की बात नहीं है, लेकिन काफी हड्डियां बॉडी की टूटी हुई हैं और काफी इंजरीज हैं, और अब रोज सुबह जब उठते हैं तो वही सब याद आती है जब दर्द होती है, तो है, बट एज आई सेड इट्स पार्ट ऑफ द गेम. Hello, Ajay sir. To your right here, please. Thank you for an excellent trailer. Wanted to know how difficult or different the production process was to bring out this movie in IMAX. Yeah, so A for one, you have to plan it, you have to shoot it accordingly, according to 3D. There's a different technique to it. And then it's a whole process, and then the whole team comes in from IMAX, and they do a fabulous job, and the visual they create is outstanding. तब्बू जी यहाँ पर हाय, मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अजय जी बहुत ही सुंदर बनाया है आपने। यहाँ तब्बू जी आपसे जानना चाहूँगी, जनरली दिखाया ये जाता है कि महिला पुलिस जितनी भी महिला पुलिसकर्मी घायल नहीं होती, थोड़ा सा काम करके निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर शायद बहुत ही कम ऐसा मैं मौका गिन सकती हूँ आपको उंगलियों पर कि जहाँ पर महिला पुलिस को भी दिखाया गया कि वो घायल है। इस ट्रांजिशन को कैसे लेती है? बहुत सटल सा एक मैसेज देता है। मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ इस कैरेक्टर को लेके, और द फैक्ट दैट आई वाज चोजन फॉर दिस रोल, मुझे बहुत गर्व है। और मेरे लिए
ये बहुत बड़ा स्टेप अप है, प्रोग्रेस है मेरे कैरेक्टर्स में। एंड जैसा आपने कहा, जैसा हम महिला अफसर को देखते हैं और महिलाओं को देखते हैं, और ये सिर्फ जख्मी नहीं होती बल्कि जख्मी होने के बाद भी, इनफैक्ट पूरी फिल्म में मैंने एक स्लिंग पहना है, इसलिए मेरे लिए ये एक्शन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे पास अपने दोनों हाथों का सपोर्ट नहीं था एक्शन करने के लिए, भागने के लिए। तो ये कैरेक्टर एक्चुअली ओरिजिनल में मेल एक्टर किया था, तो उसको चेंज करके इन्होंने महिला कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब प्राउड मोमेंट है, मैं कह सकती हूँ। Ajay, I've got a little on the right hand side. Ajay, so last year when Drishyam 2 came, so before that Brahmastra was the last big success, and it was a long wait, and then Drishyam 2 came, and it turned out to be a blockbuster. Now this year again, it has been a wait for a very long time, for the last few weeks, that a new film comes and does some great business. And a lot of expectation is out there on Bholaa to do it. So how are you looking at that as an industry person, as someone who has been there for 30 years as a producer? I don't know. Right now, I'm not thinking about release. I'm thinking about concentrating and finishing on the quality of the film, because the post-production bit of weeks or whatever is left, we're doing. So I don't know when I'll start thinking about the release, but yeah, we just had Pathan Vishnu. That's right. Fabulous business, extraordinary business. So just fingers crossed that all the next releases will do very well, and that Bholaa will come and also be very well. Absolutely, that's the expectation. Thank you. Hi, Hi. Ajay. Hi. Hi, Ajay, sir. On your right. Okay. Samir here from Movie Talkies. So, a lot of people have guessed here that Ajay Bachchan is a part of Bholaa, but you have kept him as a secret as of now. So, can you please If you think I've kept it a secret, do you think I'll give you an answer? Are you asking? Right? Can we expect some more surprises? I don't know. You see the film. Surprises means you don't ask. You see. Ajay, hi. I want to ask you, what are the, creatively, what have you explored the changes in the Hindi remake as a director? A lot of changes. When you see the film, I mean, we talk about that. The characters have been changed completely. The base idea is similar, but otherwise you would see the whole treatment, the way the world is completely different. Completely different. The emotion is completely different. So whatever I felt should be different for me, I have done that. Tabu, I want to ask you, we a lot of female actors these days for the last many years. They want to do solo action. They want to do action movies. Have you ever thought about it? Did you ever think in the past? That's the problem. When you think about doing solo action, you can't fight with me. Huh? You have to do action with somebody or the other. You can't think about doing solo action. Protagonist. मैं ऐसा कभी सोची नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो किया है, I don't think मैंने कभी सोचा था कि मैं इस लेवल का एक्शन कर पाऊंगी, and I want to thank him for that. Hi, Deepak sir. From your right. Sir, you have worked with Ajay Devgn, so before, but this time it's quite intense action. So how was it, facing it? उनके साथ हमेशा इंटेंस रोल ही मिलते हैं मुझे। गरम भी इंटेंस था, ये भी इंटेंस, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और काफी अलग, मतलब वो लॉन्चिंग थी मेरी, री लॉन्चिंग ऐसा मान लो। जी। विनीति से पूछना चाहता हूँ कि उनको आपके साथ रोल करके कैसा लगा, क्योंकि आपकी पहली मूवी ऐसा लग रहा है। अजय जी के साथ काम करके कैसा लगा? उन्होंने बहुत साल पहले मेरे साथ काम किया था, अच्छे थे, बहुत सालों बाद। इसका जवाब आपको मिल ही गया, और ये सवाल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे से पूछा जाए कि खाना कैसा लगा। अच्छा ही लगेगा। All right, we'll just take one last question. Okay, get up. Give the gentleman this the mic. Yes. Mayur,
Thank you, Nitin, firstly, and congratulations to the team. The trailer. So center, if you can see, सबसे पहले तो जय भोलेनाथ सर। क्या बोले? सर भोला की बात हो रही है तो जाहिर है आई थिंक मेरे कलीग ने लोकेश कनकराज का नाम लिया क्योंकि मैंने दोनों फिल्में देखी है कैथी और विक्रम। तो जो मेरा एक अनुभव एक बतौर दर्शक ना कि सिर्फ जर्नलिस्ट वो ये रहा है कि ये दोनों फिल्म एक्शन है जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट जॉनर है। बट इन दोनों फिल्मों की जो आई थिंक खूबियत है और जो शायद भोला में भी रहेगी कि कैसे जो उसकी प्राइम कहानी है वो एक फैमिली स्टोरी है। जैसे इसके अंदर एक बाप इसलिए मैं पहले भी कहना चाहता था कि जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आप ज्यादा कहानी खोल नहीं सकते, तो इसलिए आपको एक्शन ज्यादा नजर आ रहा है। फिल्म में एक्शन बहुत है, लेकिन जो एक्शन कोई भी एक्शन बिना किसी इमोशन के वर्क नहीं कर सकता। तो द मेन कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्म इज इमोशन और जो कहानी है। बल्कि इसमें और ज्यादा ट्रैक्स ऐड है, तब्बू के भी ट्रैक्स एडेड हैं जिसमें एक अलग इमोशन है। सो हमेशा जब आप एक कहानी सोचते हैं तो उसका इमोशन पहले सोचते हैं। अगर आपके पीछे एक इमोशन हो, आप किसी को मारे हैं तो लोगों को मजा आता है, वो उसी की ताली मारे। अगर बिला वजह आप किसी को मारेंगे तो आई थिंक किसी का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा है। तो सबसे जरूरी चीज होती है कि आपका इमोशन सही है कि नहीं और आपका दिल अपनी सही जगह पे। मेरे ख्याल से यही इमोशन जो है मतलब जो ना सिर्फ मास ऑडियंस बट फैमिली ऑडियंस को भी आकर्षित करेगा इसी फिल्म। आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड फैमिली ऑडियंस वेयर इमोशंस आर कंसीडर्ड। इमोशन एक यूनिवर्सल इमोशन होता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो। इमोशन हमेशा एक बाप का बेटे के लिए, बेटी के लिए इमोशन, एक माँ बाप का फैमिली के लिए इमोशन, बच्चों का पेरेंट्स के लिए इमोशन, जो भी इमोशन आप ले वो सब एक ही होते हैं, एक यूनिवर्सल। Thank you so much. भूषण जी 3D फिल्म सब इंडिया में फ्यूचर कैसा देख पा रहे हैं? पहले बहुत कम बनती थी, धीरे शुरू हुई है। इंडिया में इसका फ्यूचर कैसा पा रहे हैं सिनेमा में? सिर्फ फ्यूचर तो 3D फिल्म का आज तक जितनी भी फिल्में 3D आई हैं वो आपने देखा ही है, बिजनेस उनका बहुत ज़्यादा होता है। लाइक तानाजी वाज मतलब लास्ट जो हमने साथ में फिल्म की थी तानाजी, उसका बिजनेस 3D का अगर आप देखें तो इट वाज वेरी बिग बिजनेस, 60-65% का बिजनेस 3D से आया। तो आई थिंक 3D अगर फिल्म अगर करेक्ट तरीके से हो, जिस तरीके की भोला की क्वालिटी है, तो फ्यूचर इज देयर। Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for this amazing team here. Now, before we move on to the final photo op, it's only fair that we, invite on stage or this platform some very important people, जिनके बिना शायद ये पूरा नहीं हो पाता. The co-producers of this movie. Give it up for Mr. Kumar Mangat Pathak, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां पानोरमा स्टूडियो से. Of course, Mr. Vikrant Sharma, उनके लिए तालियां. And I would like my whole team here, please. All the technicians, please, come on guys.